Okay, once again, Assalamu alaikum and good morning, everyone. Uh, I know that we Ramadan ka mahina start ho gaya hai. Still, people just have to listen. Still, a lot of people are missing in the lecture. Seven, eight, nine, only nine students are there. Nine भी नहीं है. इससे भी कम है. Still, you can pass the message. Okay. So, we'll continue the topic where we have left in the last session. I think in these 2 days we were having holidays, so we were not there in these 2 days. Um, let's start this the next point in coordination with the what I say visually pleasing composition. Okay, so these are all the topic we were learning about this HMI and this topic and the screen designing. That is the chapter name was screen designing. In the screen designing, we have gone through many small topic. Okay, like you can see, um, the design goal. First of all, we have seen the design goal. After that, there each and every component, whatever we are placing on the screen, must have a purpose and must have a meaning on the screen. Okay, must have a meaning to the user and must have a purpose in performing some task. Okay, so we had a discussion that whichever component whichever component we are adding on the screen, that must have some meaning to the user. Okay, and it must have a purpose to the performing some of the tasks. So that is the very common thing. If it does not serve a purpose in performing some of the tasks, then why to add this particular component on the screen? Okay? That is basically a noise. Okay, we had a discussion about the noise and signals also. The useful information is signal, and the unnecessary information or component or element are nothing but the noise. Okay, so we have to maximize the signal and reduce the noise. So sorry, we had a discussion about the signal and noise also. After that, organizing elements clearly and meaningfully, then consistency. Okay, so first of all, we took the example that usually people strive for their consistency in their attitude, in their thoughts, in their beliefs. Okay, so whatever attitudes and whatever thoughts they are having, so they continue their so they continue their the same thing in their like attitude have to continue, then their thoughts and beliefs have to continue. But when you talk about this consistency, so if you maintain a consistency in the design also, then हालांकि वहाँ पर एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी कोई बहुत मतलब कि बड़ी बात नहीं, मतलब उसको नहीं होना चाहिए. If people can if people can maintain the consistency in their attitude, in their thoughts, in their belief, then why not in the screen design? Okay, so we can, and we can definitely we can continue the consistency in the designing process also. That if we are making a good design, so we should consistently we should design the same screen or same type of component in the future also. Okay. So we had to talk about this one, the starting point, what should be the starting point, and regarding the textual display, then text information, then about that also, and after that the graphical and the web display. Okay, so how you're going to display it and what should be the starting point of that particular design, like web displays and graphical displays. Asha, let me clear one thing that my voice is fluctuating. It is in the form of sinusoidal wave. My voice is coming like sinusoidal wave or this coming consistency. No, no response. It is consistent. No?
Okay. But actually, when I go through the recordings, in the earlier lectures what we have taken, so in the earlier lecture, I used to see that my voice is coming like, sinus sudden wave जैसे होती है ना, वैसे wave के form में आती है, कभी कम कभी ज्यादा. So I think earlier lecture में ऐसा हुआ है पहले. So I thought कि भाई क्या issue हो सकता है, because there is nothing, I think from my side there is no issue. Uh, all the things are okay. But in the lecture, ऐसे ही आ गया ना. So okay, I will try to speak in the same uh, what I mean to say. It's clear, understandable. चलो ठीक है. मैं एक्चुअली एक ही स्पीड में एक ही पेस में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, सो दैट वो जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ओके. Then after that, ordering of data and content should be the order, then the navigation and flow. Then after that, visually pleasing. Why I'm repeating this thing? थोड़ा सा 2 दिन के बाद में जब हम लोग topic लेते हैं, so it is very difficult to conceptualize and realize that okay, where we were, okay, and from where we have to start. So let me. I'm just revising the things so that we can continue the next session. Okay. So the last topic what we have seen in the lecture was visually pleasing composition. Okay. So in visually pleasing composition, we have seen the different attributes. We have seen the different composition from which the user will please. Okay, user will feel good. Okay, by looking at your screen designing, so he or she will become happy by looking at your attributes. So we have to maintain the balance. We have to maintain symmetry, regularity, predictability, sequentiality, economy, unity, proportion, simplicity, and grouping. All these attributes we have to we have to maintain in our design. Okay, so if we will try to maintain this particular kind of attributes in our design, in our, in our in our design, then user will be happy about our screen. Okay, or whatever design we have used, so he will be happy. Okay, so obviously we have to keep some of the things in such a way that the user must be happy from the design. Okay, आप कभी कभी देखो screen पर आपकी web pages के अंदर you might have put some of the animation or some होता है कभी कभी. जैसे एग्जांपल है, इन बिटवीन ऑफ द लेक्चर्स हो सकता है कि जो लेक्चरर है या जो प्रोफेसर कभी कभी बीच में कोई जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा एक बीच में मतलब स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे. ओके, सो इन द सेम वे आपके जो elements on the screen whatever you are going to present, so that element कभी कभी ऐसे भी होने चाहिए जो यूजर को अच्छे लगे, so that आपकी स्क्रीन पर यूजर्स कंसिस्टेंटली रहे. वरना क्या होता है देखो, usually क्या करते हैं, we go to any website, okay, and we found that okay, this is for our work today, but sometimes के बस काम हुआ फौरन हट के, लेकिन if there is any interesting thing, then you stays over there for a long. Okay, कभी कभी ऐसा होता है यूजर को अच्छी लगती है तो वहाँ पे कुछ देर रुकता है, कुछ एप्लीकेशन है वो अच्छी लगी तो वहाँ पर कुछ देर रहे. So as a developer we have to put some of the element in such a way that user will be pleased. Okay, so we have seen lot of things जिससे मतलब कि user को अच्छा लगे. After that, focus and emphasis. Okay, so visually emphasize components such as most prominent element. We have to focus on the most prominent element, most important element, central idea or focal point on which the user wants to focus. So you must keep and you must place those elements in such a way that that particular that particular element will gain the focus of user for long. Okay, ये ऐसे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूजर का फोकस मतलब देर तक के लिए ले लेते हैं. ओके, सो मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट. अच्छा, हमारी अगर वेबसाइट के अंदर या हमारे एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई बग है या कोई ऐसी चीज है जो कि नहीं होना चाहिए, तो अगर कभी उसमें अगर कभी यूजर देखेगा तो यूजर विल सी फॉर दैट पर्टिकुलर बग और फॉर दैट पर्टिकुलर एरर और मिस्टेक. सो हो सकता है कि वो अच्छी चीजें देखने के बजाय आपका जो नॉइज है यानी कि जो अननेसेसरी जो आई है चीजें इररिलेवेंट चीजें आई है, so that will gain all the focus. Okay, so regarding this focus, regarding this noise, we always have to be very
cautious. Okay, there should not be any kind of noise on the screen, so that focus अगर कभी यूजर का हटा तो आपका काम समझ लो एक यूजर आपने लॉस कर दिया. Okay, is all we are learning about the screen designing. Okay, so screen designing is important here because when user will have a look on the screen first, whether it is a web page, whether it is a application, or whether it is a the web application, whatever it is. Okay, so what if you are having some kind of presentation also, so for that also, when the user look at the screen, so that must gain the focus of the user for long. Okay, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ओके, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो what will happen, तो मतलब यूजर आपका वो लॉस्ट होगा. ठीक है, सो बेसिकली हमको जो फोकस करवाना है दैट इज ऑन द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट. सेंट्रल आइडिया फोकल पॉइंट को बीच में रखना है. and changing element you can keep some sort of some mechanism so that your elements are getting changed one after another. If you have five important concepts, if you are having five important information or notices, then you can keep it in marquee in five different rows, okay, with different colors. Yeah, you can put a same marquee but with a different color. The different notices will be circulated. Okay, so most critical items which you want that today is the last date. Okay, भाई मतलब या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पर यूजर को नहीं जाना चाहिए तो आप उसको फोकस को साइड में ही करना है. ठीक है, so on some of the component or element we have to emphasize, more visually emphasize. हमको more करना है, ज्यादा करना है, और किस पे नहीं करना है उसको हम लोग को साइड में अलग अलग जगह पे रखना है. तो फोकस किस पे कितना होना चाहिए that you are going to decide. Okay, on which component, on which element the focus will be more, and on which element the focus will be less. So you are the sole person who is going to decide, or who is responsible that कि किस चीज को कहाँ रखें. Okay, हाँ स्क्रीन में काफी छोटा लिखा हूँ मैंने, बट फिर भी काम की चीज है. To provide emphasis, use techniques such as higher brightness. So these are the general instruction for the developer or for the designer who is designing the screen, so that जो focus है, जो emphasis है, वो हम उसकी जो अलग अलग techniques है उसको हम लोग use कर पाए. Okay, so we can put higher brightness. Okay, so that user will have a look, or they can let's okay. So we can keep the higher brightness, okay, and we can reverse the polarity, or we can invert the video. Okay, so this is one of the technique. Then you can have a distinctive typeface, like you can put it in the bold, italic, underlining, okay, and striking also. The striking I'm not mentioned over here, but you can put it in the striking form also. So these are the different typefaces we can put for the different, we can say, text or the information. Okay, okay, come back. Then you can keep your focus. You can keep the element in the blinking form also, so that when the things will be blinking, rapidly, then automatically user ka concentration will be focused. User ka concentration will be on that particular element. Okay, so that is a good technique in order to gain the focus, in order to get the concentration of that particular element. Uh, मतलब उस user के लिए. Line ruling and surrounding boxes or frame. Line ruling was striking one. Okay, so you have seen lot of यहाँ पर देखो होगा भी striking वाला. So, so line ruling and surrounding boxes or frames, you can put that particular text or information or element in the box, so that user will gain the focus that कि भाई ये वाला box ही में क्यों, because this is important. Then you can keep different.
colors. Okay, so the things which are important you can keep it in the red one, and the things which are normal can keep it in the red one and the blue one. Okay, so you can use different colors. Okay, but some many times the red color is used for the important one, the cautious instructions. For that we can use it accordingly. We can use, okay, larger text, animation. You can put some sort of animation, then positioning of the element, then distinctive or unusual shape. Okay, so आपने देखा होगा, तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये चल रहा है, ओके, ये आपका चल रहा है और मैंने यहाँ पर आपको मैंने एक थोड़ा सा एक डिस्टिंक्टिव और अनयूजुअल शेप मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। लुक, ये मैंने यहाँ पे एक डिस्टिंक्टिव फेस बनाया, ठीक है। तो मैंने डिस्टिंक्टिव जो शेप बनाया है, तो एवरीवन फर्स्ट लुक एट दैट पर्टिकुलर शेप। ओके, इफ यू वांट द फोकस टू बी देयर ऑन दैट, मतलब बिफोर रीडिंग, before reading the text on the screen, you want the focus of the user पहले यहाँ पे आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बना दिया। तो when user will have a look on this particular screen, then देखते से बोलेंगे अरे यार थोड़ा सा डिस्टिंक्टिव शेप लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अनयूजुअल शेप लग रहा है। और फिर meanwhile he or she will read the statement which is written inside the that particular unusual shape। Okay, so automatically user will gain the focus। so एक ये भी technique है। You can have many techniques, okay, in order to gain the focus of user, उसका concentration gain करने के लिए you have many techniques, so you can use any of them। Then isolation, you can put the things you can put the things isolated। हो सकता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये distinctive type है, इसको आपने अलग से लिखा। Okay, so user will have a look that this particular statement is written apart from this combination, और these जो points लिखे हैं, इन points से हटके एक point लिखा है, ठीक है, मतलब ये कुछ तो हटके है, कुछ तो अलग है। So you have placed that particular information in the isolation। So you can use different I mean say techniques to gain the access, sorry, to gain the focus of user का concentration gain करना, because screen पर जो concentration gain करना इतना आसान नहीं था। As you might have seen that you know many YouTubers, okay, many YouTubers who create their video to gain content, okay, so वो बहुत hard work करना पड़ता है, okay। You might have done I don't know about it, आप लोगों ने पहले किया है या नहीं किया है, but in last year when the first wave of lockdown was there, so we used to create the videos, okay, especially for operating system and for this HMI also। So not much for this particular HMI, but for operating system I used to create the video। I put एक टेबल रख के उसके ऊपर पेज रख के, फिर मेरा ट्राईपॉड से उसके ऊपर कैमरा फोकस करवा के, नहीं होता तो फिर उसको प्रॉपरली एडजस्ट करके, बिकॉज दैट ट्राईपॉड वाज नॉट ऑफ दैट मच हाई क्वालिटी, तो बार बार नीचे आ जाता, इसका जो मतलब उसको टाइट भी करने के बाद में नीचे आ जाता। सो मैंने बहुत उसके अंदर झेला है, तो आई नो। और फिर उसके बाद में फिर जब अपना वीडियो शूट हो जाए, तो वीडियो वाज अराउंड, अगर एक 10 मिनट्स का वीडियो है, एक कॉन्सेप्ट है सेमाफोर, ओके, तो सेमाफोर को एक्सप्लेन करने के लिए इट टुक्स अराउंड 10 मिनट्स, ओके। तो 10 मिनट्स के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, एंड आफ्टर दैट आई हैव दैट रॉ वीडियो इन विच देयर आर लॉट ऑफ नॉइसेस आल्सो, सम बैकग्राउंड वॉइस है, मतलब कोई नॉइस है, उसके बाद में कुछ बैकग्राउंड चीजें भी दिख रही है, ओके। So you have to do lot, you have to invest much more time in order to edit that particular video, ठीक है। You have to reduce the noise also, ठीक है, noise को clear करना है। उसके बाद में उसका जो एरिया है उसको सेलेक्ट करना है प्रॉपरली, उसको प्रोसेस करना है। जब ये आपका वीडियो जब शूट हुआ, so it was around 2.5 GB, ठीक है, 2.5 GB का वीडियो बन गया, ठीक है। बट उसको प्रोसेस करना है, कोई भी वीडियो एडिटिंग से व्हाटएवर यू हैव, तो उसको करने के बाद में फिर आपको उसको जब आप उसको एडिट करेंगे, तो जब जाके आपका वीडियो 200-250 MB का बना, या 300-400 MB का बना, ठीक है, फिर उसको आपको अपलोड करना है प्रॉपर टैगिंग के साथ में। यानी कि आई वाज जस्ट टेलिंग दैट के फॉर डूइंग दिस होल प्रोसेस कितना आपको उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, ठीक है। तो वैसे ही एक डिजाइनर को, when a designer is designing any of the screen, any web page, any application, okay, तो वो डिजाइन करते वक्त उसको इस बात का ख्याल हमेशा रखना है कि
कोई भी टाइम के लिए यूजर मेरी स्क्रीन से हटना नहीं चाहिए, ठीक है. He has to provide the things in such a way, he has to provide the things in such a way that user will not lose the focus from my screen. Okay, user नहीं देखता रहे, the user यहीं पे engage रहे. Okay, so somehow you have to do it this way. Okay, because you are also a developer, you are also a developer, and you have to think in the same manner. Okay, when if you are designing any web page, if you are designing any application, if you are designing any Java application, any desktop application, any mobile application, any web page, okay, then you have to think a lot. Okay, कि किसी भी समय, किसी भी for any instant, for any instant, आपका यूजर भागना नहीं चाहिए. अरे यार ये बोले चलो हटाओ, close. ऐसा नहीं. You have to provide as much as possible, जितना आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो उसको बनाना है, ठीक है. अदरवाइज यू हैव नो वैल्यू. जैसे ही आपका यूट्यूबर ने बना, तो यूट्यूबर को क्या करना है, उसके हर सेकंड पर, उसको अपने हर सेकंड के ऊपर उसको ऐसे एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है जो कि यूजर उस वीडियो को देखते रहे, ठीक है, ना कि उसको स्किप करके दूसरा वीडियो देखने, ठीक है. So for each and every instance, you have to provide the content in such a way that the user will stay with. ये दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन the designer has to work a lot for this. आगे चल के अगर आप में से कोई अगर UI UX अगर कभी डिजाइनर बनता है और अगर इस चीज में अगर जाता है, तो ग्राफिकल और यूजर इंटरफेस के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप, ठीक है. So when you think about it, then you need to think in many aspects, okay? And then you need to work on it also, okay. Until and unless you will work on it, you can't get the exact idea that what you have to produce in order to please the user. Okay. I hope you people are understanding and getting the things what I want to say. आगे बढ़ते हैं. De-emphasize less important elements. So obviously the information or the element which are less important, उसको आपको थोड़ा सा कम emphasize करना है, थोड़ा सा इसको ग्लिटरिंग कम करना है, इसकी जो important है ग्लिटर ज्यादा करना. To ensure that emphasize screen elements stand out, avoid emphasizing too many screen elements. बोलते ना एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, वो तो कहावत है, बहुत सारे शेर रहते हैं, बट जैसे राजा एक होता है, वैसे ही अगर कभी if you are trying to make one element focused one, if you are trying to make one element focused on the single screen, on one screen, then avoid focusing another screen on the same page. Sorry, avoid focusing another element on the same screen. एक एक स्क्रीन के ऊपर एक चीज को हाईलाइट करो, दूसरी चीज को भी हाईलाइट कराओगे तो फिर यूजर विल कंपेयर बोथ द थिंग्स. ओके, फिर आपका एक को तो गिरना ही गिरना है. सो ट्राई टू मेक फोकस, ट्राई टू try to glitter only one element on one screen. Okay, एक सिंगल स्क्रीन पर किसी एक एलिमेंट को ही ग्लिटर करवाओ और उसको फोकस करवाओ, ताकि यूजर विल फोकस and user will concentrate on that particular element what you are trying to glitter. Okay, ऐसा ना हो कि दो की वजह से फिर आपका नुकसान हो जाए, ठीक है. So you have to avoid it emphasizing too many screen elements. Okay, एक दो की बात चलो भाई, दूसरा भी कर लिया आपने, और दूसरा थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट था, उसने आपने इसको भी कर लिया, थोड़ा कम एम्फेसाइज करके कर लिया, तो हो भी जाए, लेकिन ज्यादा नहीं कर. यूजिंग टू मैनी एम्फेसाइज टेक्निक, मल्टीपल टेक्निक एक ही जगह पर अगर आप कभी डाल दोगे तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. ओके, so if you are emphasizing an screen element over here on the screen, then use single technique. Okay? एक या दो मुश्किल से टेक्निक यूज करो, मल्टीपल टेक्निक एक ही जगह घुसेड़ना नहीं, ठीक है. So minimize screen clutter. I told you about that term, that is screen clutter. Okay, that clutter means, okay, the difference or the gap between the two elements. Okay, on the screen, that is nothing but the clutter. So we have to avoid this cluttering. Okay, मैं glittering उसकी बात कर रहा था, that is the different thing, and clutter ये अलग है, ठीक है. The clutter is nothing but the gap or the differences between the two screen elements. Okay, for example आपने दो बटन रखा है, दो बटन के बीच में जो गैप है, अगर कभी आपने कंसिस्टेंट गैप रखेगा, अगर आप कंसिस्टेंट गैप्स अगर रखेंगे, सो दैट इज अ गुड आइडिया. ओके,
If you will keep that particular inconsistent agar gap rakhenge, so that will become a clutter. In web page design, call attention to new or changed content. Okay, you have a if you have a web pages, then that is your dynamic one. Okay, the data can change, the data may change. Okay, information will change on the web pages. So you have to call attention on new and new. You have to change the element in such a way that okay, whatever new elements or the information is coming next after the current one, so that is okay, and that is well focused for the user. Okay, तो यूजर उसके अंदर भी इंटरेस्ट ले. ओके, ऐसा ना हो कि एक इन्फॉर्मेशन गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन आई तो यूजर बोल रहा है अरे यार ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई, मुझे पहले वाली देखनी या मुझे थर्ड वाली देखनी. ठीक है, तो वट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर प्रेजेंटिंग टू द यूजर, दैट ऑल आर इम्पोर्टेंट टू द यूजर. Okay, because the things are continuously changing on the web pages. Ensure that the page text is not overwhelmed by page background. Foreground color and background color, you have to keep utmost care about these two color, like foreground color and background color. So you know about the foreground color and background color very well. So the contrast must be there. Okay, आपको कैसे, that is your area. Okay, yes. चलो आगे बढ़ते हैं. Presenting information simply and meaningfully. So all these topics are very very simple. आप लोग ने भी देखा अभी हम लोग जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, so those topics are at damn clear. So ज़्यादा कुछ explanations में required नहीं है, बस समझते चलो. आगे चल के फिर आपको खाली ये points याद कर रखने हैं, and then you will be able to write the answer of this question easily. Okay. So presenting information simply and meaningfully. Whatever information we are presenting, that must have a meaning and that must be simple. That's very common. I mean to say, very common message, very common way. So provide legibility. Information is noticeable and distinguishable. User must be able to notice the information what we have added on the screen, and can make a can make a category of the element whatever you have added. Okay, so for distinguish be correct. Provide readability. Information So provide information is provide readability. Information is identifiable, interpretable and attractive. अब देखो इतने सारे लोग टर्म्स यूज करते हैं ना, कभी कभी आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं सर कितने सारे टर्म याद में रखेंगे हम लोग. अच्छा, आपके प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिंपली एंड मीनिंगफुली, इतना तो दो है उसके अंदर. उसके अंदर एक दो तीन 6 पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर. Provide legibility, provide readability, provide information in the usable form, utilize contrasting display feature, because I told you about the colors also. Then create visual lines, then be consistent. So these are the points which comes under the this topic. That is, we have to present the information simply and meaningfully. फिर आपके एलिजिबिलिटी के अंदर नोटिसेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल. देन रीडेबिलिटी के अंदर तीन अलग से टर्म्स है, आइडेंटिफाइबल, इंटरप्रेटेबल, अट्रैक्टिव. कॉमन टर्म्स है, कॉमन है, इससे अक्सर आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो रीडेबिलिटी आइडेंटिफाई करके आना चाहिए इंफॉर्मेशन को. हालांकि दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड एवरीवन आइडेंटिफाइज द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, बट स्टिल दे हैव मेंशन्ड द important terms in this particular topic, that is readability. Okay, provide readability means you have to provide the information in the identifiable form. User must be able to identify his or her own information. If this particular information is for me and this is not for me. Okay, so identify होना चाहिए, interpret करके आना चाहिए, and then वो attractive भी होना चाहिए. तो ये पूरा हो जाएगा तो फिर वो उसको readable कर पाएगा, मतलब उसको read कर पाएगा. That's all about the second point. Third, present information in usable form. Translation, transposition, and references to documentation should not be required to interpret and understandable information. You are not supposed to keep the information or the content of the element in such a way that user will have to interpret the information which is present on the screen. User will have to interpret the screen information. User will have
to interpret the information which is present on the screen. ऐसा ऐसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको यूजेबल फॉर्म में रखो, डायरेक्टली यूजर कैन अंडरस्टैंड इट, ओके, directly user can see it and directly user can access it, okay. You should not do like that कि भाई यूजर इसको ट्रांसपोजिशन करना चाहिए, यूजर इसको ट्रांसलेट करे, यूजर इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करे, इसको इंटरप्रेट करे, तभी जाके यूजर समझ सकता है। ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। यूजर the developer must keep the information or elements in such a form that it is in the usable, it is in the directly usable form. Utilize contrasting display features, okay, we had a discussion about this only, that we must keep it in the contrasting feature to attract and call attention to different screen element, okay, we can keep it in the different colors in the contrasting manner, okay. If there's any important information or instruction you want to give to the user, then you can keep it in the red color, or with the red background white color, you can keep it in that way also, okay. And if there is something which is less important, you can keep it in the different color. So contrasting feature you can use in order to present your information simply and meaningfully, okay. Then create visual lines, implicit and explicit, to guide the eyes, okay. First line khatam, uske baad ek line maar do, you can keep the visual lines also, okay. So एक line भी आप लोग खींच सकते हैं. For example, first section is over, okay. So this is the step number 1, how to register yourself on the Mumbai University portal. So this is the one information you want to present. So step number 1, so you can keep the information, you can explain those terms in between of the two horizontal lines, okay. That is the visual lines, okay. After that, step number 2, then again horizontal line, then step number 3, then again horizontal line, then step number 4, explain it, then horizontal line. You can keep it in that also, so that user can distinguish between the information what you have presented. Be consistent. We had a separate subtopic of this one, that is consistently information show karna hai in appearance and procedural usage. So छोड़ो उसको. So we need to present the information simply and meaningfully. Okay. आगे बढ़ते हैं. Come to the typography. Even the time is over, but I will take more 5 minutes to start with this particular topic, that is typography. Let me see. Typography used to font types and families. This is all about the type of font we use, the type of font we use, and the typeface भी है. Then उसको कैसे यूज करना है, कहाँ पर बोल्ड, कहाँ पर कैपिटल, कहाँ पर हाइट कम, कहाँ पर हाइट ज्यादा, कहाँ पर थिकनेस कम, लाइन वगैरह, each and everything. Example, font sizes, font style and font weight, then font cases, then text का background क्या होना चाहिए, then others, amount of information to present ये तो बात का topic है. Then statistical graphic, we had a discussion about in this in the experiment, ठीक है. तो statistical graphic, use of statistical graphic, then component, then types है इसके, curve and line graph surface chart, then scatter plot, then bar chart, then histogram, then segmented or stacked bars, then pie chart, then flow chart, and done. Okay, तो ये चैप्टर हमारा, और दो मतलब लगेंगे हम लोग को लेक्चर. एक लेक्चर तो फॉन्ट में चला जाएगा, टाइपोग्राफी, टाइप फॉन्ट, ये सब हम लोग एक लेक्चर में काम करते हैं. तो अभी ट्राई करते हैं. 46 हो रहे हैं, 4-5 मिनट लगेंगे. देखो अगर हो गया तो बहुत अच्छी. इसमें कुछ है नहीं, कुछ लॉजिकल कुछ भी नहीं. एक और लेक्चर लगेगा कंप्लीट करने के लिए, देन वी विल कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. मैं चाह रहा हूँ जितने लिए आपका ये भी आपका सब खत्म हो जाए तो अच्छा है. तो देन यू विल बी एबल टू focus on your project also and your different activities, your upgradation skill. मैं ये सब चीजों से ज्यादा, एकेडमिक से ज्यादा, आई फोकस्ड ऑन दी योर अपग्रेडेशन पार्ट, योर सेल्फ अपग्रेडेशन. ठीक है, चलो इसको हम लोग नहीं करते हैं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बट आई एम श्योर दैट यू पीपल्स आर डूइंग दिस थिंग. ओके, you are self upgrading, you are upgrading yourself, okay, in as per the requirement of the industry. Okay, right now the current market के हिसाब से आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो. अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. बिकॉज राइट नाउ अभी जो डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से आप जैसे ही कॉलेज
में आपका एक पैर रहेगा, एक पैर मार्केट में रहेगा, सो यू विल बी नोइंग ऑल द थिंग्स, ओके, एंड यू विल रियलाइज दैट कि हाँ अरे ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, सो मैंने पहले ही रिक्वायरमेंट्स पता क्यों नहीं करनी, ओके, यू हैव मेनी पीपल्स इन योर कॉन्टैक्ट, like you have TPO, you have Amit sir, you can contact them, you can come to know your skills. Those who have already started and those who already know about the requirements, then this is very good. Okay, those who have not calculated, they must calculate it as early as possible and then do the needful according to the requirements. जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, so it will be for your son. तो चलो रुकते हैं यहाँ पर, टाइपोग्राफी और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. Start. Yes. Let me stop the recording.